Good morning, everyone. This session is the lecture series of research paper writing. But today's session, we are focusing that why we actually, why mini projects are incorporated in the curriculum of the students, even major projects. Okay, but before that, as we already introduced this session earlier, and I have asked the participants to answer if somebody can, that why research and research paper writing should be incorporated in the, why, what is the importance? Okay, and later on we will go ahead with the importance of the mini projects. So I think one of the in the audience, we have Harsh, who would like to share his thoughts. So over to you, Harsh. Yes, ma'am. Thank you. Good morning, everyone. I think researching is important because researching helps us gather facts and possible solutions to our problem statement. Even during research, we can find other problems that can have solutions. Or even if we don't have solutions to these problems, we can write this in a report. We can make a report as a research paper which we can share on the internet nowadays, where people with similar mindset to me or our problems can find solutions and we can collaborate together to solve various problems. Okay, very good. Now, whatever you answered, Harsh, have you already experienced this or you just said it randomly? I want to know that. No, ma'am. Actually, last year we had a subject called design thinking. So in that, my group's topic was of a maid agency, where I knew this was a problem, but my friends had solutions that I didn't think of. And we had written a small research report that our faculty had asked us to do. Okay. Now, see, this is one of the case study which highlights that since Harsh has already done the work, as he said, design thinking, he was learning and he had a topic to explore. He was confident enough to answer this question immediately. So one thing is that before we started this session, we were discussing about that we all have come to this particular curriculum by our choice. Okay, that is, you are computer engineering students or maybe computer background. But finally, we are here to get job and we face the interview. So in interviews, our confidence matters. As I was saying earlier, there is a difference between attitude and arrogance. So your attitude comes with confidence, but of course, it should be humble. And if it leads to overconfidence, then your arrogance is reflected. So when you are confident about certain thing comes when you have already worked. Now, mini projects are incorporated in your curriculum so that whatever assignments you do in your labs, okay, you need to understand whether you can consolidate it into a problem statement. Whether do you have a design, as he rightly said, design thinking. Do you have a thinking capability to formulate a problem, first of all? When you have a capability to formulate a problem, then you learn different subjects to solve those problems by whatever domain knowledge you have. And you accomplish it with the help of assignments. When you take a case study, you accomplish a mini project. So when you are doing a mini project, you are actually in a capacity. It's a process that you identify or formulate a problem statement, do design thinking process. Of course, we have got couple of sessions taken on design thinking. I can put it in the description box or you can look it on the channel, those who have not done it. So design thinking is that formulating a problem is actually a process of design thinking. आपका thinking ability बढ़ता है, आप डिक करते हो कि कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन है, फिर आप लिटरेचर सर्वे करते हो जिससे आप ये और डिक करते हो कि क्या क्या लोगों ने काम किया है, जो कि लोगों ने काम किया है मुझे वापस नहीं करना है, मेरा एक डिफरेंट अप्रोच है इसको लेके. एंड देन फाइनली यू लैंड अप टू अ सोल्यूशन बाय experimenting first different solutions done by the world, and a little drop in the ocean also makes a difference, and that is called research.
अब ये जो आप इतना कॉन्फिडेंटली सब कर रहे हो, यानी आप कॉन्फिडेंटली नहीं, रादर जो एफर्ट्स ले रहे हो, हाउ विल यू शोकेस इन योर इंटरव्यू एंड हाउ यू विल शोकेस इट टू द वर्ल्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन? तो आप मिनी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे, वो एग्जीक्यूशन आप हर इंसान को जाके नहीं बता के आएंगे इन द वर्ल्ड कि मैंने ये एग्जीक्यूट किया, मैंने ये एग्जीक्यूट किया। सो तो रिसर्च पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के वर्क को इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, है ना, जो हमारे IEEE फॉर्मेट है, उसके थ्रू यू आर शोकेसिंग टू द वर्ल्ड। एंड इफ इट्स अ गुड क्वालिटी पेपर, इट गेट्स पब्लिश्ड इन अ गुड क्वालिटी जर्नल, and that adds to your biodata saying that you have actually done certain contribution in technology. How's that sound? And your name is on that particular research paper which goes World Wide Web. So this is one of the way to show your confidence through your work, not only by just speaking, but through on paper, on www, in the form of research paper publication, whether in conference or journal, in your biodata. So this adds value to your attitude and confidence. क्योंकि कोई इंटरव्यूअर आपको कोई एक सब्जेक्ट पे अगर पूछेगा, it may happen that you have forgotten that subject fundamental, not fundamentals, but actually details. Okay. Of course, you should be knowing the fundamentals of each subject. For example, if you have learned software engineering, you should know what is software engineering. क्या क्या आपने पढ़ा? UML is a language for software engineering. तो अगर आपको किसी ने UML का फुल फॉर्म पूछा, आपको आना चाहिए। बट बहुत ज्यादा डिटेल में मे बी यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट एवरी अल्गोरिदम ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ओके। तो इंटरव्यूअर अगर आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछने लग जाएगा एंड यू आर नॉट, यू डोंट रिमेंबर दैट, डू यू थिंक कि इस बेसिस पे आपको जज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। सो आपका इवैल्यूएशन कैसे होता है? थ्रू योर मिनी प्रोजेक्ट्स एंड मेजर प्रोजेक्ट्स। अब मेजर प्रोजेक्ट आप कब बहुत ही अच्छा बनाएंगे? जब आपके मिनी प्रोजेक्ट्स आपको समझ में आ जाए धीरे धीरे हाउ टू गो थ्रू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सो फाइनली यू लैंड अप विद अ गुड मेजर प्रोजेक्ट। आप डायरेक्टली मेजर प्रोजेक्ट करने जाएंगे फाइनल ईयर में विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ मिनी प्रोजेक्ट? ऑफकोर्स, जैसे हर्ष ने अपने एक्सपीरियंस से ही आंसर इतना अच्छा बताया, वो भी एक्सपीरियंस ही ने कहा। सिमिलरली आपका मेजर प्रोजेक्ट भी एक्सपीरियंसेस से गुजरेगा मिनी प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और वो मेजर प्रोजेक्ट आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा। इंटरव्यूज आप फाइनल ईयर में देते हैं और उस समय आप आपको मेजर प्रोजेक्ट के बारे में जनरली लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको ये पता है ये लास्ट चीज है जो वो करंटली कर रहा होगा, उसके बारे में तो उसको नॉलेज होना चाहिए। हम क्यों उसको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पूछ के और फिर उसको जज करें? हो सकता है 4 साल पहले, क्या वी डोंट इवन रिमेंबर व्हाट हैपेंड 6 मंथ्स बैक। सो इट इज वेरी वेरी नेचुरल। कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है 6 मंथ्स का, तो वो आपको ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी पे काम कराने वाली है उसकी ट्रेनिंग देगी, लेकिन उनको ये जानना है कि आपका डिजाइन थिंकिंग स्किल्स क्या है आपने, तो वो आपके मेजर प्रोजेक्ट के क्वेश्चन से आएगा। एंड दैट इज व्हाई मेजर प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट द क्रैक फॉर योर गोइंग थ्रू योर इंटरव्यूज। सो आई होप ये पूरी जर्नी आपको समझ में आई है कि हर चीज का रोल क्या क्या है, मिनी प्रोजेक्ट का रोल क्या है, मेजर प्रोजेक्ट का रोल क्या है। ऑफकोर्स इंटरव्यूज का रोल आपको बताने की जरूरत नहीं है, और उसमें साथ ही साथ आपके रिसर्च पेपर का रोल क्या है। अगर आपने बोल दिया कि मेरा ये पेपर इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पब्लिश्ड है और आपने अपना पेपर उनको पढ़ने के लिए सामने आपने उनकी हार्ड कॉपी दे दी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ देम विच दे वर सपोज टू आस्क will get solved. So that is one big step, okay, to crack your interview. So I think this small session is useful to you to understand the different aspects, what what has been incorporated in your curriculum, उनकी importance क्या क्या है। Okay, so on the chat, we have got a message from Pratik. If someone wants to go in the research paper, I guess he has answered the question why research paper is important. So I'll just read his chat message. If someone wants to go in the research after completing the degree, so they should know how the research is done and in what way it is written so that it covers all the important points.
सो वेरी गुड प्रतीक, एक्चुअली जो मैंने अभी आपको 15-20 मिनट्स में बताया, आपने उसको समराइज कर दिया है एक लाइन में। तो ये जो एक लाइन में आपने समराइज किया है, यही है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, जिसपे आप सॉल्यूशंस निकाल के यू आर गोइंग टू शोकेस, स्टैंपिंग योर नेम टू द वर्ल्ड। ओके, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फ्रॉम प्रतीक। तो ये कैसे समझ में आता है? बिकॉज यू यू हैव एक्सप्रेस्ड हियर। अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया होता तो हमें पता होता कि प्रतीक के कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हैं। तो यही चीज है कि ये आप रिसर्च पेपर राइटिंग से कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइटल ऑफ द पेपर वो क्रिस्प होता है। आप कोई 4 लाइन का अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो किसी को नहीं समझेगा, यानी फैसिनेट नहीं करेगा, है ना। और वो नॉर्म्स भी है IEEE का। तो आपको, इट्स अ चैलेंज एक्चुअली, कि आपको अपने पूरे थॉट्स एंड आइडियाज पूरे पेपर के एक टाइटल में फैसिनेट करवाने हैं। एक टाइटल से समझ में आना चाहिए कि पूरी कहानी क्या होनी चाहिए। ठीक है? तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैं रिपीट करूंगी, एक लाइन में पूरे पेपर की कहानी। ठीक है? अभी आपका पेपर में आपने से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डाले हैं, लेकिन आपने स्पेसिफिकली अगर री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग्स पे काम किया है, उसमें भी री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग पे आपने से बेलमैन इक्वेशन या मार्कोव डिसीजन प्रोसेस पे काम किया है, तो आप स्पेसिफिकली टाइटल में ये मेंशन करेंगे कि दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजिंग मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। बट वो ऐसा होना चाहिए कि वो फैसिनेट करे कि आप क्या अपग्रेडेशन कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में। तो मैंने पहले के लेक्चर सीरीज में भी बात कई बार बताया है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 के प्रॉब्लम्स है। टाइप 1 टोटली ओरिजिनल, टाइप 2 ऑलरेडी प्रॉब्लम इज सॉल्व, यू प्रपोज अ बेटर सोल्यूशन। तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये हाईलाइट होना चाहिए कि ये नॉवेल है, या तो ये ऑलरेडी अगर किसी ने मार्को डिसीजन प्रोसेस यूज भी किया होगा तो भी इस एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज किया है, या अगर यूज किया है तो हम क्या इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें एक 1 लाइन में डालना इज एक्चुअली अ चैलेंज। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप पूरा पेपर लिखने के बाद भी आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको ही नहीं पता है कि हाउ द पेपर फ्लो विल गो। तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एंड में भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लेकिन कहानी का शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। अगर आप एक रफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि आपके पेपर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। So I will just request you that after I end this recording, we will continue the session, और आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करना है। अभी के लिए आप एक रफ फॉर्मुलेट कीजिए, एटलीस्ट आपको मुझे एक आइडिया आ जाएगा। प्लीज शेयर दोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑन चैट, ताकि मुझे आइडिया आ जाएगा आपको किस डोमेन पे काम करना है, क्या आप करना चाहते हो। कोई डिजाइन थिंकिंग के थ्रू, अगर आपने डिजाइन थिंकिंग ऑलरेडी पढ़ा है तो आपके पास तो बहुत सारे आइडियाज आने चाहिए दिमाग में, और कभी कभी आए भी होंगे। So I give you this opportunity to just rethink about those ideas, frame it into a problem statement. You can use the AI tool। मेरे लेक्चर सीरीज 3 पे जाके देखिए, वो टोटली हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजिंग AI वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके देखिए एंड हैव अ क्विक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके, इन नेक्स्ट सम टाइम। So thank you very much for your patience listening. This is Dr. Aisha Butalia here. The session ends. Just rejoin the same link.